Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, hello, Data and Skill Explorers. Welcome to DivKlearner, a bit forward daily. Today we will learn working with dates in mQuery conversion. आज हम सीखेंगे working with dates in mQuery conversion को. In this session, step by step, we will explore how to convert text, number, different formats into time, date time, and date time zone. इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे टेक्स्ट नंबर और डिफरेंट फॉर्मेट्स को हम डेट टाइम टाइम और डेट टाइम जोन में कन्वर्ट कैसे करते हैं बिकॉज इफ योर डेटा इज रॉन्ग योर विजुअल एंड कैलकुलेशन विल नेवर वर्क करेक्टली क्योंकि अगर आपका डेटा टाइप गलत है तो विजुअल और कैलकुलेशन कभी सही काम नहीं करेंगे. And mastering conversion is a real world skill every analyst must have. और conversion को सही समझना एक real world skill है जो हर analyst के पास होना चाहिए. If you are new to my channel, make sure to subscribe. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. If you like this video, hit the like button and share it with your friends and colleagues who may find it useful. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ जो इसे यूजफुल पा सकते हैं. So let us try to explore and churn data today. चलो शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और डेटा को एक्सप्लोर और चर्न करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये मेरी रिपोर्ट है जिसके अंदर मैंने शुरू से इसी पे कर रखा है और यहाँ पर मैंने बुकमार्क मैनेजर लगा रखा है आपका या बुकमार्क नेविगेशन लगा रखा है. इस नेविगेशन की वजह से मेरे सारे पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड है. बट द एग्जांपल दैट आई वांट टू गिव इज कन्वर्जन. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कन्वर्जन का नाम दे देता हूँ क्योंकि ये छूट गया. ये कन्वर्जन डेट्स हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कन्वर्जन डेट्स हम क्या कर रहे हैं. वी आर टेकिंग द डेट्स. हम यहाँ पे डेट ले रहे हैं उसको हम सिर्फ डेट टाइम में दिखा रहे हैं डेट में दिखा रहे हैं सिलेक्टेड टाइम में दिखा रहे हैं. कैलेंडर का डेट टाइम मतलब यहाँ से जो हमने डेट टाइम सिलेक्ट करा तो उसमें 000 है और डेट टाइम जोन जहाँ पर आप +530 देख सकते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है विच वी कैन यूज in this report. So I'll just repeat the same thing in English, what I've spoken in Hindi. What I've done is I'm continuing this on the same project which was earlier. I'm using the bookmark navigation here, and these are the calendar controls which are the same from the previous pages as well. What we are doing here is we are working on conversion dates where I'm trying to show you the date if it is selected from the calendar, because initially we were just working on the date example. We did not use the date time, and that's the reason you see date time as 000 here when I'm selecting it from the calendar. But then what I've done is I've added certain things there which I'll talk about in some time. But what I've done is here I'm selecting the date time from the other table that I've created. I've been working on the selected date where I can see the date, and this is the time that we have there. This is talking about the zone where you're working in. So let's very quickly go to home and then we click on the transform data so that it can open up the Power Query editor for us. अब हमने क्या करा, हमने होम पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया जिसने हमारे लिए एडिटर खोल दिया. In this editor, what I've done is I have added the conversion table. I just started the same way that I've done it for the other ones. Then I've added up the columns, and in one of the columns I did play a trick here, right? So what I did was I took 3 random numbers which were depicting the hours of the day, the minutes of the day,
and this was talking about the seconds of the day. So after doing this, what I've done is I have randomly generated the number and I have put in the custom date time with this particular date, because initially when I created the table, my date, table had only date. It did not have the date time attached to it. तो जैसे मैं बता रहा था इंग्लिश में, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड किया, बाकी सारी चीजें मैंने पुराने वाले टेबल में से ही करी हैं, बट यहाँ पर आके मैंने एक रैंडम कॉलम को ऐड किया। इस रैंडम कॉलम के अंदर मैंने तीन तरह के रैंडम लगाए, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने उसको आवर्स के लिए लिया, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 0 से 23 तक। दूसरा मैंने इसको भी रैंडमाइज करा, जिसके अंदर 0 से लेकर 59 लिखा, ताकि मेरे मिनट्स आ सकें, और ये सेकेंड। और क्योंकि जब मैंने इनिशियली टेबल बनाया था तो मेरे टेबल के अंदर डेट टाइम नहीं था, तो मैंने इसके अंदर अपना डेट टाइम को ऐड कर दिया, ताकि मैं इसमें और कैलकुलेशन कर सकूं। After doing or creating this date time, I created another custom column which is just the date part of it. So if you see here, I'll try to see if I can increase the size of it, but in future I'll write it down on a piece of word. I can show you in the notepad as well, but in future I'll just try to see something that I can make it more available to you. So if you see, I hope this is visible. This is showing you table.add column. So I'm saying random time. That is the previous step. And I'm selecting the date, and it is taking date from the custom date time. So from the date time, it is just taking the date out of it, right? Then I'm changing the type of it. I'm changing it to the date type. This is date time. You see a small watch in front of it as well. The next one is where you're taking the date time from the original date. That's the reason you're getting all the times as 00s here. The next one is where you're taking the time from the custom date time column that you have created. Let me just show you. That is the other thing, or the other part that we were working on. So this is how you can take out the time from the date time. And after this, I'm just changing it type to time. So you can see I have the type time here. So I've selected that, and at the end what I'm doing is I'm putting the time zone as well. So let me just show you this particular method as well. So this is where I'm taking the time zone. The time zone will be taken from my locale, the uh, the locale that I'm using, my Power BI on, that is associated with my laptop, and that is where you're seeing plus 530, because uh, I'm recording this from India. So जैसे मैं बता रहा था, मैंने सबसे पहले डेट का कॉलम लिया, उसके बाद मैंने एक कस्टम कॉलम को ऐड किया, फिर मैंने सिलेक्टेड डेट को इस्तेमाल करा, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जब मैंने डेट फ्रॉम को सिलेक्ट करा तो उसने सिर्फ डेट ले ली। जब मैंने कस्टम डेट टाइम का इस्तेमाल करा तो उसने टाइम ले लिया, जो मैंने यहाँ पर करा। और जब मैंने जोन का इस्तेमाल करा तो इसने प्लस 530 दिखा दिया एंड में, क्योंकि जोन जो था दैट इज मेरे लिए काम करते हुए इंडिया था, तो ये इंडिया का टाइम दिखा रहा है। और जब मैंने यहाँ पर जाकर, मैं इसको भी आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा कि कौन से स्टेप पे मैंने उसको बनाया था। यस, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, क्योंकि जब मैंने ओरिजिनली पहले वाला टेबल डेट क्रिएट करा था तो डेट के अंदर मेरे पास कोई टाइम नहीं था। मैंने बाकी सारे जितने भी कॉलम है वो कस्टम डेट टाइम से लिए हैं, बट ये वाला टेबल जो है जिसमें सिलेक्टेड टाइम है, उसमें भी कस्टम डेट टाइम ही है। ओके, then it should have given me the custom date time. नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड वाले कॉलम के अंदर, हाँ सिलेक्टेड डेट ये रहा, मैंने गलत कॉपी करा, क्योंकि सिलेक्टेड डेट के अंदर मैंने डेट लिया था। तो ये है वो मेरा मेथड। डेट लेने से क्या हुआ, क्योंकि डेट का टेबल मेरे पास पहले से ही था और डेट के टेबल के अंदर मेरे पास कोई टाइम नहीं था, तो उसने सारी जगह पे मुझे 000000 दिखा दिया। दैट इज हाउ
it should have worked, and that's how it has generated the value for me. ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं. लेट्स जस्ट अप्लाई इट, कम आउट ऑफ इट. हम इसको बंद करते हैं अप्लाई होने के बाद. Once it has been applied, we close this. Then what I've done is I've just arranged the kept everything the same, and then I've just added the columns here. Now you would be wondering that I'm using the slicer. If I click on any of those things, it is going to the extracting part. If I go to any of the things there, it goes to the slicer date. But this one is going to the extraction path, right? But still everything is working. Why everything is working is because of this relationship that we have created, which is between the conversion date and the slicer date, and that is a one-to-one active relationship. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आधी चीज़ें तो एक टेबल से ली स्लाइसर से, और डेट लिया फिर मैंने एक्सट्रैक्शन टेबल से, और ये सारी वैल्यूज जो हैं ये मैं कन्वर्जन से ले रहा हूँ. तो ये काम कैसे कर रही हैं? ये काम कर रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ से एक मॉडल जनरेट करा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लाइसर डेट एंड कन्वर्जन इन दोनों के बीच में 1-to-1 का रिलेशनशिप है. एंड ड्यू टू दैट व्हाट इज हैपनिंग इज ये सारी चीज़ें सेम फिल्टर होके आ रही हैं जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. और ये वाली वैल्यू सीधा कैलेंडर से आ रही है जिसमें कोई टाइम नहीं है. बाकी सबके अंदर हमने रैंडमली टाइम ऐड करा है, राइट. That's all for today, Data and Scale Explorers. I hope you have moved one step forward in your learning journey, right? बस आज के लिए इतना ही है. Data and Scale Explorers, आपने अपने लर्निंग जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है. Today's session ends here, but reminder, only regular practice will make you an expert. आज का सेशन यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखिए सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगी. If you found this video useful, please like and share it, and subscribe to the channel so you don't miss the new or next lesson. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले लेसन को आप मिस ना करें. I am your skill and data explorer peer, DivKlearner, a bit forward daily. मैं हूं आपका स्किल और डेटा एक्सप्लोरर पेयर, DivKlearner, a bit forward daily. See you in the next video. Until then, keep exploring, keep churning. अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक keep exploring, keep churning.